Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are decoding the Hindu newspaper dated 3rd of July 2021. तो आज हम 3rd जुलाई 2021 का डेली न्यूज एनालिसिस करने वाले हैं हिंदू न्यूज़पेपर का. 4 to 5 important articles were there in the Hindu newspaper today that we are going to study. When it comes to editorials, there were 4 editorials which were important in today's newspaper. You can go through them. I have told you repeatedly that editorials are meant for your own analytical, for your own analysis. आपके खुद analytical understanding के लिए editorials important होते हैं, तो you have to study them yourselves. Don't be dependent on anybody to decode them for you, and don't think that editorials are tough to understand. Please, when you haven't read the editorials, by just the length of the editorials, you cannot judge that they are tough or they are complex to understand. They are just the explanatory version of the current affairs that you are reading daily. जो भी न्यूज में आता है ना डेली, उसी का एक एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल बनकर एडिटोरियल में आ जाता है. उसी के सॉल्यूशंस, उसी के इश्यूज एडिटोरियल्स में बता दिए जाते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है करंट अफेयर्स में और इसका ये सोल्यूशन हो सकता है. तो आपको उसी के अंडरस्टैंडिंग से, उसी ओपिनियन से पढ़ना है एडिटोरियल को. एंड ट्राई टू फ्रेम योर ओन व्यू पॉइंट व्हेन यू स्टडी द एडिटोरियल. डू नॉट कॉपी पेस्ट समबडी एल्सेस व्यू पॉइंट व्हेन यू अंडरस्टैंड द एडिटोरियल्स. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपको एडिटोरियल समझा दिया, वो अपने व्यू पॉइंट से समझाएगा, तो इससे क्या होगा, आप उसके व्यू पॉइंट को रट रहे होगे और अंदर ले रहे होगे. ऐसा नहीं करना, अपने खुद के व्यूज बनाने, वरना इंटरव्यू में ब्लैंक हो जाओगे. ठीक है. सो वंस you learn to frame your own views, you can face even the mains answer writing challenge in the interviews. Okay, so the class PDF will be uploaded on our Telegram channel. Let's get started. The first important article in the newspaper was on the first page related to Indian economy, GS paper 3. Goods exports touch record $95 billion in Q1. So India has registered its highest quarterly merchandise exports of $95 billion during the first quarter. Now what is the first quarter? I'll just draw it over here. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर क्या है, यहाँ पर अप्रैल से जून. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. अप्रैल से जून ऑफ 2021-22, ये पहला क्वार्टर शुरू हुआ है 2021-22 का, अप्रैल टू जून मंथ. ओके, सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून ऑफ 2021-22 financial year, the first quarter, India has registered highest merchandise exports. Now there are two types of exports. I'll tell you that. See over here, when we study the concept of balance of trade, right? तो यहाँ पर आप देखोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब होता है ट्रेड बैलेंस. हम उसे मर्केंडाइज बैलेंस बोलते हैं. दैट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स. देन देयर इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, बट वी मोस्टली स्टडी बैलेंस ऑफ ट्रेड इन टर्म्स ऑफ मर्केंडाइज. ओके, दैट मीन्स कमोडिटीज. मर्केंडाइज मतलब कमोडिटीज हो जाता है. ठीक है. सो वी हैव रजिस्टर्ड हाईएस्ट कमोडिटी एक्सपोर्ट्स ऑफ $95 billion. नाउ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ $400 billion in the merchandise exports for the current fiscal year 2021-22, and so far we have achieved $95 billion target. So the Commerce Ministry has decided that in collaboration with private sector, MSMEs etc, we are going to achieve this target. ये जो हमने पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का टारगेट रखा है ना, $400 billion का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का, कमोडिटी एक्सपोर्ट का, यहाँ पर आप देखो बॉक्स में दिया हुआ है, तो हम इसको अचीव करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में. However, India was a net importer in June 2021. हम 2021 जून के मंथ में हमारा जो इंपोर्ट था ना, उसमें ट्रेड डेफिसिट देखा गया था $9.4 बिलियन का. ये पॉइंट याद रखिएगा. नाउ टॉप 3 एक्सपोर्ट कमोडिटीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्रग फॉर्मुलेशंस, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स. टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, चाइना, यूएई. एंड टॉप 3 इंपोर्ट कमोडिटीज, देखो एक्सपोर्ट मतलब जो हम बाहर से बाहर बेचते हैं, इंपोर्ट मतलब जो हम बाहर से खरीदते हैं, मंगाते हैं. क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड गोल्ड आर टॉप 3 इंपोर्ट कमोडिटीज. ओके, now you must have heard the word balance of payment. आपने ये balance of payment word सुना होगा. Now in balance of payment we have two types of accounts. First is the current account, second is the capital account. Now in the current account we keep the record of trade in goods, trade in services and the transfer payments. जो भी हम transfer factors of production use करते हैं ना, जैसे कि land हो गया, capital हो गया, लेबर हो गया, तो हम जो उनको उनके सर्विस के बदले में उनको जो पैसा देते हैं वो ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाता है. तो चाहे ट्रेड इन गुड्स हो, ट्रेड इन सर्विसेज हो, ट्रांसफर पेमेंट्स हो, ये करंट अकाउंट में आता है. देन कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अदर फ्लोज, एक्सटर्नल असिस्टेंस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स. दीज आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट.
Okay, now the balance of payment, it summarizes for a specific time period economic transactions of an economy with the rest of the world. बाकी countries के साथ जो हमारी country economic transactions करती है ना, तो वो पूरा balance of payment में आता है, ठीक है. And always remember that the export trade is regulated by Directorate General of Foreign Trade, which comes under Ministry of Commerce and Industry. This is important pointer for your upcoming preliminary examination. Another important article, Kerala's houseboats get ready to sail. Now this is another important article. The waters of Vembanad Lake are stirring once again. A very strong vaccination drive underway has raised hopes of Kerala houseboat industry to open for business as early as July. Kerala में vaccination drive काफी strongly चल रही है, तो बोला जा रहा है कि जुलाई के मंथ में यानी कि इसी महीने में houseboat start हो जाएंगी केरला में. Now here Vembanad Lake has been mentioned, so you have to study it from the perspective of prelims. Vembanad Lake is a freshwater lake. Mostly it's a freshwater lake, but when the lake water nears the Arabian Sea, because ये Arabian Sea से connected है ना, तो जब Arabian Sea के करीब आता है Vembanad Lake का पानी, तो वो salty हो जाता है. And it is the longest lake in India and it is the largest lake in Kerala. Please write it down. And it lays right by the Arabian Sea. Now this Vembanad Lake is known by 3 famous names. In Kochi, it is known as the Kochi Lake. In Kuttanad, it is known as the Punnamada Lake, and in Kottayam, it is known as the Vembanadu Lake. These are the important points that you have to remember. Okay. Before we move forward, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched India's most comprehensive UPSC test series. There will be 80 tests every year which will be uploaded by Unacademy, and out of these 80 tests, 50 will be prelims related tests and 30 will be mains related tests. Now these tests are worth rupees 30,000, but they are given to you for free by Unacademy if you take a subscription on Unacademy. अगर आप Unacademy पे 1 साल या उससे ज़्यादा का subscription लेते हो, if you are taking 1 year or above subscription on Unacademy, you will get these tests for free. You can use code ARPITA10 to get 10% discount on your Unacademy Plus subscription. The links are given below in the description box. So make sure that you practice till you crack it. The next important article, LET could be behind drone attack in Jammu, says DGP. Now this is another important article. Here the terrorists are using drone technology for terror attacks. So what is a drone? Layman technology. Why it is known as layman technology? Because even a layman, anybody, a common person can also understand how to fly a drone, how to use a drone. So drones are becoming security threats, major security threats, especially in the conflict zones. Now it is a layman technology for the unmanned एयरक्राफ्ट विच इज नोन एज UA. अब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो होता है ना, अनमैन्ड मतलब कोई इंसान नहीं चला रहा है इस एयरक्राफ्ट को, ये रिमोट कंट्रोल से चलता है. तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के 3 सबसेट्स होते हैं. पहला होता है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, सेकंड इज ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट एंड थर्ड इज मॉडल एयरक्राफ्ट. Now the drones, they fly low and therefore they cannot be detected by any radar system. तो यहाँ पर आप देखोगे ड्रोन्स जो होते हैं ना, ये लो लेवल पे फ्लाई करते हैं, तो इसको किसी रडार सिस्टम के अंडर नहीं के अक्रॉस नहीं आते, ये रडार सिस्टम में नहीं आ पाते, इसलिए इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. एंड देयर आर मेनी रीजंस दैट मेनी पीपल कैन नाउ परचेज ड्रोन्स. व्हाई? बिकॉज दे आर रिलेटिवली चीपर, दे आर रिमोटली कंट्रोल्ड एंड दे आर वेरी इजी टू ऑपरेट. सो यू मस्ट हैव सीन मेनी यूट्यूबर्स, मेनी व्लॉगर्स हु आर यूजिंग ड्रोन्स right in today's time. Even the terrorists, they have also have the reach, or you can say the hold on the drone technology. That is why this kind of technology is going, you can say common among the masses. Okay, so this topic comes under GS paper 3 in the section of internal security in your and science and technology also in your GS paper 3 in mains. Another important article, बहुत ही important article है ये art and culture के perspective से, it's very important. The article says 4,000-year-old settlement found during excavation in Odisha. So the Odisha Institute of Maritime and Southeast Asian Studies Archaeological Wing or Department of the state government has discovered a 4,000-year-old settlement and ancient artifacts in the Balasore district. Now after getting traces of fortified early historic sites, fortified मतलब जहाँ किले बने होते हैं, near the Balasore town, the OIMSEAS had sought permission. It has asked for permission from Archaeological Survey of India to document the Durga Devi village in Remuna Tehsil, which is in Odisha, where these artifacts have been found. नाउ ASI का कहना यह है कि जो साइट है ना, इसमें सर्कुलर मड पाए गए हैं, सर्कुलर मड फोर्टिफिकेशन, मतलब यहाँ पर घर होंगे या आपका कोई भी सामान या स्ट्रक्चर बना होगा, इस तरीके से उसे फोर्टिफाई किया होगा. एंड इट इज बिटवीन द रिवर सोना इन द साउथ एंड द रिवर बुरहा बालांग
बुरहा बालांग ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, इसके बीच में ये चीजें पाई गई हैं, नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? Now here in this particular site there have been traces of 3 cultural phases: Chalcolithic phase, early historic phase and iron age। ये 3 जो आपके ages हैं एंशियंट हिस्ट्री में, इन तीनों एजेस के ट्रेसेस पाए गए हैं इस पर्टिकुलर साइट में। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस। यू हैव टू स्टडी व्हाट इज चाल्कोलिथिक एज, व्हाट इज आयरन एज एंड व्हाट इज दिस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। इनके फीचर्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफस्टाइल्स, दैट यू हैव टू स्टडी। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर सीरीज। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आई हो, अच्छी लगी हो, एंड आई एक्सपेक्टिंग दैट यू आर making notes or taking down notes of the lecture series that we are presenting on our channel. So on this note, we are wrapping up the class. Thank you everyone for participating in the session.